Hello students, good morning everyone. How are you beta? Hope you all are safe and healthy at home. Home, stay safe. Don't move anywhere. Listen today. Before we start anything, let's pray to God everyone. Then after we discuss the other things. Okay? Everyone join your hands. Close your eyes beta. Start 3 times Omkara. Start Gayatri Mantra. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Everyone rub your hands. Put it on your face. And slowly open your eyes beta. Listen guys, which chapter is our going on? Data handling, है ना? And different data we had collected. We look at the textbook and worksheet. So many examples, है ना? So many sums. In last video we will learn the textbook page number 134 and 135. And today our work is on page number 136. Okay. Students, so write your date and CW beta. Done everyone. Now what is here? Here is the I said to you many types of data we can handling. We can put in proper place या फिर we can arrange them या we collect. Okay. And today our topic is to collect the temperature and find out the minimum and maximum temperature and difference, so many things. Okay, so learn with me. I have do this by my side. ठीक है? Now read with me. Note down the maximum and minimum. Maximum means सबसे ज़्यादा and minimum means सबसे कम. ओके, मिनिमम टेम्परेचर ऑफ, यहाँ पे जो 10 प्लेसेस है उसका मैंने 5 कर दिया है. क्या 10 कट करके डू एट देयर 5 10 प्लेसेस की जगह मैंने 5 प्लेसेस का टेम्परेचर यहाँ पे किया. बिकॉज इफ आई एम राइटिंग हियर 10 प्लेसेस इट्स वेरी होच पोच, है ना. सो आई हैव जस्ट कट इट डाउन 10 एंड राइट देयर 5 डिफरेंट प्लेसेस in the country and find the difference range, है ना. we have to write the difference range. टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है, वो डिफरेंट रेंज वहाँ पे राइट डाउन. ओके, सो व्हाट इज इन योर डेटा हैंडलिंग? डेट वी हैव टू मेंशन. ठीक है, फिर प्लेस, नेम ऑफ द प्लेस हियर, सिटी, नेम ऑफ द सिटीज, मैक्सिमम टेम्परेचर. Same city ka you have to write the maximum temperature and then minimum temperature here. Okay, then difference plus or minus. ठीक है ना, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसी में से मिनिमम टेम्परेचर माइनस करोगे, यू गेट योर डिफरेंस. ओके, चलो. नाउ लेट्स ऑन विच डेट आई हैव डू दिस. आई हैव डू ऑन दैट माई वीडियो. जब मैंने वीडियो बनाया वही डेट का मैंने यहाँ लिया है. अगस्त में कोई डेट से मैंने वीडियो बनाया था, वही डेट का टेम्परेचर मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है. ओके, तो
So which city I have write there? So write with me. Write your first city is Morbi. And listen students, if you want to do the lines, you can. यहाँ पे अगर आप properly line draw करना चाहते हो, because you can, okay? ऐसी line draw करना चाहते हो, so you can draw their line also. It's look very decent, okay? Okay. Now चलो फर्स्ट सिटी इज राइट योर मोरबी एंड द टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर इज 36 डिग्री. व्हाट इज द इट्स मीनिंग? इट्स रीड एज डिग्री. व्हाट इज इट्स रीड एज डिग्री. ठीक है, टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री एंड दिस सी इज सेल्सियस. मोरबी 36 डिग्री सेल्सियस. ओके, एंड maximum, this is the maximum and minimum is 28 degree. Okay, so difference, what is difference? 36 minus 28. so 28 से 36 तक मूव हुआ है. 28 है, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 and 36. how many degrees is there? 8. so here is your difference is 8. okay, now next city which I have choose Bangalore, है ना. so Bangalore maximum temperature is 27 and minimum temperature is 20. maximum is 27 and minimum is 20. so 27 minus 20 and difference is 7. what is the difference beta? difference is 7. next one I have choose Kolkata. so Kolkata maximum temperature is 35 degree and minimum temperature is 28 degree and its difference is 35 minus 28 is equal to 7 degree. clear? do work with me beta. hope you all are understand. fourth one I have selected Delhi. which city I have selected there? Delhi. Delhi, the maximum temperature is 36 degree and minimum temperature is 28 degree. clear? now 36 minus 28 is 8 degree. okay, now last I have selected Bombay. Bombay maximum temperature is 32 degree and minimum temperature is 26 degree. so 32 minus 26 and it's a 6 degree. okay, clear students? hope you all are understand. Write same like me. okay, and next one, now there are some questions also. now answer the following questions. okay, read with me. what is the difference between the highest and the lowest temperature of a place? जो सबसे हाई टेम्परेचर है that we have to find and then सबसे lowest and we have to write their difference. okay, let's find which one is highest degree temperature. so in this is the maximum temperature, means highest temperature 36. here is also 36 and here is also 36. so 36 minus what is lowest temperature is 20. so 36 minus 20 degree, 36 minus 20 is equal to 16. कैसे किया? 6 minus 0 6 and 3 minus 2 is 1. so 16 degree is the maximum and minimum degree difference. okay, now question number second. how many places have the same range of temperature? कितने ऐसे प्लेसेस है जिसको सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर है ना. सो लुक हियर, रेंज मीन्स डिफरेंस जो हमने निकाला था वो. हियर इज मोरबी ऑल्सो 8 एंड विच दिल्ली ऑल्सो 8. सो मोरबी एंड दिल्ली, दिस इज द वन प्लेस है ना. बोथ दिस मीन्स दोनों का सेम डिग्री मीन्स 8 डिग्री. and then the second one is the Bangalore is 7 and Kolkata also 7.
उसका डिफरेंस रेंज भी 7 है। सो मैंने 1 + 1 मीन्स 2D, ठीक है ना। 1 प्लस इन दोनों का जो सेम है, 1 प्लस मैंने काउंट किया है, और ये सर्कल वाले जो 8 है, दिस आर दी सेम 8 8। सो 1 + 2 1 मीन्स 2। सो 2 ऐसी जगह है जहाँ पे आप उन दोनों का टेम्परेचर की रेंज सेम आ रही है। ओके, एक्चुअली 4 होता है ना, बेंगलोर और कोलकाता मीन्स 2, एंड देन मोरबी एंड देन दिल्ली, वो भी दोनों मिलके 2, एक्चुअली 4 होता है। बट हमें रेंज फाइंड आउट करना, किन किन की रेंज सेम है, तो इन दोनों की रेंज मीन्स इन दोनों का 1 मीन्स सेम है, और ये मोरबी एंड दिल्ली का भी सेम है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर C इज which place is the hottest? So hottest means maximum temperature. So which city has maximum temperature? Let's find. And this is the maximum temperature. One is here is Delhi, Morbi and Delhi. Which city has maximum temperature? Delhi and Morbi. So which place is the hottest? Morbi and Delhi. If you want to do a long line, you can. Okay, students. Morbi and Delhi. Done. Do work with me. Okay. Now next one. Which places is the coldest? Coldest means सबसे cool, सबसे ठंडा. So minimum वाला सबसे lowest रहेगा. So which is the minimum? Bangalore. So write your answer is Bangalore. Which places is coldest? Coldest means सबसे ठंडा. It is the Bangalore. Okay. Next one. How many places have same maximum temperature? How many places have same maximum temperature? So किसको maximum temperature same है? मोरबी एंड दिल्ली. ये 2 जन है जिसका टेम्परेचर सेम है, मोरबी एंड दिल्ली. ओके. नाउ नेक्स्ट योर क्वेश्चन इज देयर बेटा. विच प्लेस हैज द स्मॉलेस्ट रेंज? सबसे रेंज मीन्स ये रेंज की बात हो रही. रेंज सबसे कम कहाँ पे है? मीन्स मैक्सिमम और मिनिमम का जो डिफरेंस है वो सबसे कम किसकी है? तो इट्स अ बॉम्बे. सबसे कम रेंज किसकी है? मीन्स मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस सबसे कम किसका है? सो इट इज द बॉम्बे. Okay students, so here is this topic is here over, and in next page number our work is in worksheet. Okay, so worksheet page number 22 beta, everyone, worksheet page number 22. Okay students, so write your date and CW here beta, date and CW. चले. काउंट द नंबर ऑफ बुक्स इन योर बैग. आपकी बैग में टोटल बुक्स काउंट करनी है, ठीक है ना. सो हाउ मेनी बुक्स इन योर बैग? सो जस्ट आई एम काउंटिंग हियर योर टेक्स्ट बुक. हाँ, व्हाट आई एम गोइंग टू काउंट योर टेक्स्ट बुक ओनली. ओके. सो देखो, देयर इज अ मेन 5 सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, EVS एंड SS. सो 5 बुक्स वो रहेगी. क्लियर. देन 1 बुक इज एप्टीट्यूड. So 6 and 1 is your Hindi grammar, Hindi vyakaran. So how many books in your bag? There are the 7 books. Okay. Clear beta? Hope you all understand. Main subject your 5 means 5 books, and your aptitude is your 6th one, and your Hindi vyakaran is your 7th book there. Okay. Next one, count the number of girls in your class. ठीक है ना, आपके क्लास की गर्ल काउंट करनी है. ओके स्टूडेंट्स. सो हियर इज सपोज इन योर क्लास देर आर द 34 स्टूडेंट्स. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? 34. सो आउट ऑफ देम 34 टोटल स्टूडेंट्स. हाउ मेनी? 34. Out of there, how many girls you have to, number of girls in your class? So there are the 14 girls in your class. And count number of boys in your class. So total students जो था उसमें से 14 girls है, तो how many boys are there? 20 boys. Okay.
count the number of benches in your class. So 20 plus 14 means 34 total students. Each bench has 2 students. So how many total benches in your class? 17. Okay. Guys, hope you all understand. Now count number of fans in your class. So in our class I have counted, it's a 4 fans. Okay. Count the number of tube lights in your class. So in our class there are 2 tube lights. One is in front side and one is at back side. Okay. Now count the number of windows in your class. Okay. So in your class it may be 1, 2 and 3 windows. How many? Each classes has 3 windows. Okay. Now count the number of pencils in your geometry box. Geometry box means आपका compass. So most of students have 2 to 3 pencil. कितनी हो सकती है? मम्मा ने कितनी दी होगी? 1 देंगे तो फिर मिस हो जाए तो वो बच्चे को परेशानी रहेगी. So 2 और 3. 3 पेंसिल 2 दी होती, किसी की मम्मी ने 3 डाल दी होती है. ओके. सो काउंट द नंबर ऑफ कलर्स इन योर कलर बॉक्स. Means in a color box there are 10 colors. Someone's color has 12. So how many colors are there in your color box? 10 to 12. Okay. Now count the number of doors in your class. So number of doors are 1. In here Mickey class has 2 doors, but we consider all the classes have the 1 door only. Okay. All the classes has how many doors? 1 doors. Okay. So this page is here complete. Now next page is your homework. Page number 23. And today our this chapter is also over. Our syllabus also over in a math. Okay students. 27. Write your date and CW. Now what is the question here? Here a small means animals. Now observe and give me answer. Observe the pictures of jungle given below. So how many animals are? More than 2, 3. Okay. So let's count. What is the question here? Count the number of animals of each type and fill in the table. सारे टाइप्स के एनिमल्स को हमें काउंट करना है और वी हैव टू फिल दिस टेबल. हमें ये टेबल को फिल करना है. लेट्स काउंट एनिमल. हाउ मेनी एनिमल? 1, 2, 3. So this is your homework. So write yourself. I am just explaining. Lion, how many? 1 lion only. Monkeys, how many? 1, 2, 3, 4. So 4 monkeys. Giraffe, how many? 1, 2, 3. So 3 giraffe. And zebra 1 and 2 only. So write your 2. Now which animal is the most in number? Means सबसे ज्यादा नंबर का एनिमल कौन है? Monkey. So write your monkey. Which animal is the least in number? एनिमल का नाम लिखना है. Okay, not a quantity. Which animal? It is the lion. Okay. फिर how many more elephants are there than lion? Lion से elephant कितने ज्यादा है? So there are 3 elephant and 1 lion. So 3 minus 1 is equal to 2. 2 more elephant than lion. Okay. So how many different kind of animals are there in given picture? How many total different kind of animals? So different, there are 1, 2, 3, 4 and 5 types of animal in this picture. Okay students. Here is our chapter is over and our textbook worksheet, all the things over. And now after this 2 days you have 2 holidays for your Janmashtami break, and after that we will revise our chapters. Okay students, have a nice day. Bye bye. We will meet after the 5 days holidays. Okay students, enjoy your holidays and do a lot of fun. Okay. And there are Janmashtami. So everyone pray to God Krishna. We will meet
सुन, जल्दी से हम मिल जाए, वैसी गॉड कृष्णा को प्रेयर करना। ओके ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।